Assalamualaikum everyone and welcome to the third episode of Whineandine. Today we have Ubaid Mustafa with us, who will introduce himself. Sweet. yeah. Yeah. Well, thank you for coming though No and problem, taking the no time problem. out, Pleasure, even on a pleasure. Saturday. I usually wake, as I mentioned before, I usually wake up at like 6:30 because that's my wake up time. That is very fascinating though because मैं अभी भी late होती हूँ office के लिए. My office is like 10 o'clock. Yeah, I go at 11 a.m. I think it's fine because I think when you show up early, nobody takes you seriously. If somebody wakes up early at work, because you have to come in if you're early. I'm nothing against people who show up early. I respect people who show up early at work, like time पे आते हैं, time से जाते हैं, ठीक है. One of our colleagues is a very nice guy. He shows up dot at 8:30. That's good. He's punctual. He's very punctual, ठीक है. And he's very particular about like meetings और सारा कुछ. And whenever he's late, तो सारे कहते यार वो late हो गया तो ये वो. And everybody is looking at him यार तुम late आए हो, desk पे देख रहे हैं. जो लोग late आते हैं उससे पहले आ जाते हैं जब. हाँ, जो लेट आ रहे होते हैं उनको सब पता होता है कि ये लेट आ रहे हैं, तो they don't question. और दफ्तर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यार लेट आते हैं, ठीक है, मतलब it's fine, मतलब not late, मतलब there's a set time कि यार 10 बजे से तक आ जाएं आप, ठीक है, इतना 10 से लेट ना. तो और कुछ लोग हैं जो 10 बजे के बाद भी आ रहे हैं. मतलब winter, यार I get it I don't know where this is going, but like I get it if you're single in winters, तो आप लेट क्यों हो रहे हैं यार. सही है, मतलब that's what my take is. If you're single, तो आप टाइम पे आ जाए ना सर्दियों में, ठीक है. I'll get back to that. First, please introduce yourself. Guys, this is Ubaid Mustafa, please. My name is Ubaid Mustafa. As someone has mentioned, I am a video producer. I work for Lums University, and my background is documentary film. I have a master's degree in documentary filmmaking, and yeah, I am currently in Lahore, and like yeah, so today I'm here. Wow, documentary. Yeah. I don't watch documentaries. I find them very boring, but good job. Yeah. Thank you for like appreciating the fact that the documentary filmmakers have the hote hain. It's like one of the things. So गरीब होते तो फिर क्यों किया? Yeah, fiction is something I don't really like. I'm not saying like doing fiction is something that I don't really like. I can't deal with that many people. I've done that before, but I can't deal with like 70 people on a film set. Because you don't like people? It's not it's not that I don't like people, but it's also that managing people, especially in Pakistan or anywhere in the world, is like, I think especially in Pakistan is very different. I have nothing against the grip crew because I know they're like underpaid. There's no job security. Day to day चल रहे होते हैं. और film producers पैसे time पे नहीं देते. Nothing against film producers, but that's the reality. People don't pay on time, so they have the professional lack of professionalism is abundant. Basically, it's annoying. So, service industry, I think higher industry, everybody pays very slow or delayed. Even in clients like we have, और वो अपनी payment 2 महीने बाद कर रहे होते हैं, 3 महीने बाद कर रहे होते हैं. That's true. That's very true. So it's like chain effect आता है, फिर वो नीचे से लेके ऊपर तक. हाँ, तो सभी गरीब है. It's not just documentary वाले लोग. Everybody is गरीब. Depends. मतलब नहीं, I don't think like documentary में especially आप इस तरह से पैसे नहीं लगेगा. Commercially आप अगर आपकी कोई बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म है तो फिर आपको कमर्शियल पैसे मिल जाएंगे थोड़े बहुत, लेकिन कमर्शियली अक्लेम कोई इस तरह से फिल्म नहीं होगी आपके बहुत सारे पैसे सिनेमाज में चल रही है. लाहौर में दुनिया में इंडिया में अगर आप चले जाओ तो सिनेमाज में डॉक्यूमेंट्रीज लगती हैं. पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी फिल्में लगा के मतलब मौला जाट उसने लाइक दोबारा रिपीट पे लगा दी है, पता नहीं क्यों. People like it. मतलब people like it, I get it, but the other Pakistani films, Pakistanis people don't watch documentaries, so they should. But a lot of this is the niche who watch documentaries. That's true. पाकिस्तान में तो एक PTV पे एक टाइम पे होता था, वो तो थोड़ा बहुत कर देते थे वो, लेकिन अब तो there's like no space for documentary or stuff. So yeah. So what kind of documentaries do you make? Yeah, I make like observational films mostly, and then it's my recent 2 films, like my diploma film from Documaz, it was a self-portrait, I think, an film essay about myself and my mother, and then that would be interesting. Yeah. I want to watch that. I'll watch that. I'll share the link. And then my feature-length film is about
all the films that I could have made, that's the title of the film. तो वो जो भी फिल्म मुझे बनानी थी बीच में छोड़ दिया उनको मैंने जोड़ के made it. Oh, that's interesting. So the documentary touches about yourself. Yeah, it's like It's what, like your life, your It's- personality, it's your like struggles. life. It's like the time of life I was going through. 2021 was a rough year for most people because of the pandemic, and I was in Lisbon, isolated and everything. My mother was in Pakistan, so she was sick and everything. तो वो भी बड़ा अजीब टाइम था. आप ट्रैवल नहीं कर सकते आसानी से. फिर ट्रैवल अगर पाकिस्तान आ जाएंगे तो तब आपको फिर वापस आना मुश्किल है. Yeah. तब यूरोप ने कहा, लिस्बन पोर्चुगल ने कहा हुआ था भाई पाकिस्तान से आप नहीं आ सकते unless and until आपकी सर्टेन वैक्सीनेशन लगी हुई है और वैक्सीनेटेड हैं तो फिर आप आ सकते हैं. पाकिस्तान में तो फाइजर नहीं थी. And you wanted to come to Pakistan. One part of me wanted to come to Pakistan, but I also knew how hard it would be to come back to Europe, entering into Europe, yeah, because of the restrictions and everything. So because वो सबका ये pandemic was also like a reality check कि भाई आपके पासपोर्ट की आपके मुल्क के थर्ड वर्ल्ड की एक्चुअली औकात क्या है, वो किस तरह से आपको देखते हैं आपके पासपोर्ट को. और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो इंडिया गए दोस्त हमारे, वो वापस नहीं आ सके क्योंकि उन्होंने कहा था भाई फाइजर लगेगी या जॉनसन लगेगी तो फिर आप आ सकते हैं. दैट्स अ होल डिफरेंट टॉपिक. लेकिन वो उसका भी था कि भाई अगर चले गए तो पाकिस्तान नहीं चले जाना तो फांसी ना जाए. डिग्री भी पूरी करनी है तो तो वापस नहीं आने देंगे. Yeah. That's sad. But so yeah, that's never I think having a Pakistani passport is sad. should be proud. Elections आ रहे हैं, वोट दो. Elections आ रहे हैं, लेकिन elections का एक बड़ा interesting scene है. We were having a discussion yesterday at my workplace. Most of the people, there's a number you can actually like SMS your ID card number. Yeah. वो सारा आपकी डिटेल आती है कि भाई हल्का किधर है, क्या है, क्या नहीं. तो जो मॉडल टाउन में रह रहा है उसका कोई हरबंसपुर है, जो जोहटाउन में रहता है उसका पता नहीं कहाँ जल्लो के पास कहीं है. कि भाई वो क्यों है, मतलब मैं यहाँ रह रहा हूँ 10 सालों से 15 सालों से. Maybe they want you to make an effort. हाँ, एफर्ट करें या मेहनत करें, मेहनत में अजमत जाएं जितना आपको उस मुल्क से प्यार है. I will not show off, but yeah, मेरा defense. Sweet. So yeah. So, but हाँ कुछ लोगों के साथ में systems खराब हैं, वो कह रहे हैं, confuse भी कर रहे हैं ताकि लोग जा ना सके. हाँ, वो जो confuse कर रहे हैं लोग हैं कुछ जो confuse कर रहे हैं. तो but anyway, we're not going to shit on our country. It's a very nice it's country. the best country ever. Yeah. But going back to what you were saying, कि if you're single in winters, so you shouldn't be late on work. हाँ, मतलब यार अगर आप वही अकेले हैं तो फिर आपको रोक कौन रहा है, आपको कौन रोक रहा है. ठीक है कि आपका your bed is warm and everything, you have hard time getting out of your bed, but if you have a person like sleeping next to you, that's something else. तो like चलो snooze पे डाल दिया 10 मिनट और, लेकिन वो भी नहीं है तो फिर आप निकल के आ गए ना. मतलब किसी ना किसी पॉइंट पे तो निकलना है. ठीक है यार, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो कहते थे कि यार एक दिन ना, this is not recent, this is like 5-6 years ago. I was working at a place and very nice workplace, but there was one day बारिश हो रही थी. मैं पाकिस्तान में नहीं था, पाकिस्तान से बाहर था. तो बाहर बारिश हो रही थी तो मैंने कहा यार चलो मौसम एंजॉय करते हैं जाके. तो मेरा बॉस भी नहीं था, बाकी लोग जिसको रिपोर्ट वो भी नहीं था. मैंने कहा यार उसको मैसेज करूँ, क्या करूँ. तो हमारे एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि यार देखो अगर कोई तुम्हारे लिए गा नहीं रही ना कि तेरी 2 टकिया की नौकरी से मेरे लाखों का सामान जाए तो बेटा काम कर लो, ठीक है ना, बैठ जाओ. ठीक है, तो वही वाला सीन है ना कि आपके साथ कोई लेटा नहीं हुआ, मतलब there's no one sharing a bed with you, so you have to get out of your bed ultimately. So why face the embarrassment of going late at work? So just चले जाए ना, उठे और हिम्मत I don't think सिर्फ ये reasons होती हैं. Sometimes you इसके अलावा यार क्या इसके because I am single and I still wake up late and okay. I'm always late to work. अच्छा, okay, always like either it's summers or winter. Yeah. सर summers में फिर भी I can get up. But winters में ना आप cozy होके अपने कंबल के अंदर घुसे होते हो और bed is warm and you're very sleepy and lazy, so you don't want to get up. It also depends on what time do you go to bed. Like that, if you're going bed at like okay, I had this whole idea before like before 2 months. That 4 hours of sleep is okay. It's not okay. It's not okay. At least 6 hours. मैं डॉक्टर से नहीं भाई कहाँ किसने कहा आपसे, तो मैंने कहा भाई हमने यही पढ़ा कि अगर मेहनत करनी है आप
तो रिच होना है, रिच तो आपको 4 घंटे सोना है, लेकिन नो दैट्स नॉट इट, लाइक ही सेड कि भाई 8 घंटे आपको चाहिए। तो I now appreciate people who sleep 8 hours. I do appreciate that. I think 6 hours enough. 8 hours is waste I of time. think 8 hours is luxury. I think बहुत सारे लोगों के लिए 6 घंटे भी luxury है, अगर आप उसमें से देखें। अगर आप मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, आपको 2 नौकरियां करनी है, सस्टेन लाइफस्टाइल सस्टेन करना, तो कुछ लोगों के लिए तो 6 घंटे भी luxury है। लेकिन वही कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आप अच्छा आपने ये कहा कि यार you're perpetually late and Because you're single. yeah, because you wanna just sleep a bit more. So what's holding you back? What makes your like bed clingy? Like that's Clingy. the That's a good question. Even though there's no one there, but thoughts. There's no motivation to get up. okay. Imagining what the bed would be if So I just watching Netflix or anything. It's your me time basically, and you don't want your me time to be over. And लेकिन when अगर you're 8 घंटे सो लिया आपने तो कितना वो me time सो चाहिए? लिया ना, वो तो सो रहे थे, आपको क्या पता सोते हुए आपको मी टाइम थोड़ी था. So when you wake up but you're still in the bed and you're just like not doing anything and just staring at the wall thinking about stuff, that's the me time, not the sleeping part. So okay, ठीक है, मैं समझ जाता हूँ, हम समझ रहे हैं कि me time है. So why not, if you like office time is like 9, 10. so you can wake up at 7. Because I was having this conversation with a friend. Okay, I don't know if I should call her a friend. Like I'll refer to her as a friend. Okay. So we having a conversation like how we can like should hang out and like watch Netflix in bed and everything. And then she's like I have office tomorrow. Office. Okay. So मैंने कहा यार चलो office. We were talking about cuddles. Like I'll get to the point. We were talking about cuddles in the morning. ठीक है. And she's like नहीं भाई दफ्तर जाना होता है. तो आधा घंटे में क्या ही करोगे? मैंने कहा 9 बजे जाना है तो 7 बजे उठ के कटल करेंगे ना, 8:30 उठ के कटल. So yeah, so her idea was like, bro, 8:30 बजे उठ के I have to show up at work at 9, so I have 30 minutes of buffer zone. So and I was like, we won't start cuddling at like 8:30. We'll like जल्दी उठेंगे ना. So yeah. मुझे नहीं पता कि लोग इसको टाइमिंग भी करते हैं, but okay. Because I know people. I was like this at like 2 years ago, 3 years ago almost. So I used to be this person. Like my partner used to like teach, so she had to wake up at 7, and she had to catch the bus train at like 8ish, 8:15, 8:30 तक, ताकि वो अपनी क्लास 9:30 की क्लास तक पहुंचे. Yeah. So she had to catch the train at like 8:30ish. max. ये 9:30 क्लास होती थी और आधा पौना घंटा लगता था और सेट अप. So that like whole practice of like her waking up at 7 and then cuddles and everything, नाश्ता किया, कट्टे वो अपने चले गई, I minding my own business, like cleaning the house, like doing something. So that was like, I was like, these people can do this. This is doable. Like this is because in my previous like से पहले वाला relationship, they like things were like so haphazard. Like आपको क्या दांत ब्रश करने का टाइम होता था, cuddle तो खैर दूर की बात. So she also had the same problem. Like she would have work at like 9:30 and she would wake up at 9:50. So that was the whole thing. So like, but again, like I think like this, there has to be a research on this. I don't know, somebody asked research like this whole thing, like and how timings. What's holding single people back, and what's making like their bed clingy, like क्या मतलब क्या हो रहा है? They feel relaxed. They don't wanna wake up and start the shit doing everything all over again. Everybody has a very basic routine sometimes, so they're sick of it. So until and it's like उस दिन मैंने सुबह 7 बजे ओल्ड लाहौर जाना था with friends. सही है. तो तब मैं 7 बजे उठ गई थी. There was motivation, there was excitement. So you're saying like basically if you hate your job, it doesn't matter. Like, कि आप जल्दी जा रहे हैं, लेट जा रहे हैं, उससे आप you don't really want to. It's not about job. It's just you sometimes get sick of the routine, and your motivation just goes down and down, and that's why the bed is more attractive than going to the same place again, I think. Well, then you're going to bed again like every day, every single night. Well, like I get it. Like it's something like, yeah, I get it. Like daftar bhi jana hai. Clearly, you don't love your bed. I do love my bed. It's not like I don't.
I do love my bed. I think it's I think beds are very sacred places. I think sacred spaces. ठीक है. I have very, how should I put it? I have very uh, absurd sort of relationship with my bed. I don't like people sitting on my bed. You can't like just show up with your outside clothes and like sit on my bed. No, that's a No, big because because like I don't like your clothes are dirty. You don't want to like what if their person's clothes are clean? like यार आप बाहर भी तो निकल रहे हो ना, आप घर से बाहर जा रहे हो, आप Germs आ germs जाते हाँ हैं. वो आ जाते हैं. Germophobic. I'm not germophobic, but I don't appreciate people like sitting on someone Couch पे बैठे. couch पे जो बैठने की जगह वहां बैठे ना, आप बिस्तर पर नहीं बैठे ना, आप जब वो लेटने के लिए और मेरे लेटने के लिए जिसको मैं चाहता हूँ कि वो लेटे वहां पे उसके लिए, वो आपके लिए नहीं, या आप या किसी और बंदे के लिए नहीं, वो आके उस पर लेट जाए कि यार आई जस्ट हेल्प माई सेल्फ, बेड लुक्स कम्फी एंड एवरीथिंग. सो या That's interesting. Because my room is all like everybody's in there. There's no personal space. That's it. अच्छा And I okay. have niece and nephews who are jumping on the bed all the Oh time. wow. How old are they? One is 2, I think, another is 6. अच्छा okay. And they have this mirror in front to jump करके देख रहे होते हैं अपने आप को शीशे में. It's something. Apparently, wow. it's entertainment high. for them. So I don't. I'm like I don't have a say, but I don't like जब मेरी bedsheet खराब हो जाती है. हाँ सेम सेम. तो मुझे वो होती है उलझन किसको मैंने बस सही करना है. हाँ वो बहुत बहुत जरूरी है. और जितने भी लोग सुन रहे हैं like I think my मेरा फिल्म इंस्ट्रक्टर था पोर्चुगल में, very nice guy. So he once said like we were like discussing a film and everything. So like I show like few clips from my room because I was making this film. So he's like, "Is that your bed?" I was like, "Yeah." So he started laughing because like my bed was very neat and everything. And then he said, "Did you make it for the film? Did you do it for the film for the sake of the shot?" I was like, "नहीं भाई, पहले सुबह उठ के the first thing I do is like कि भाई bed सीधा करना है, सारा कुछ करना है." क्योंकि मुझे किसी ने कहा था, पता नहीं कौन था वो, अल्लाह का नेक आदमी, उसने कहा था कि यार जो आपको मोटिवेशन होती है ना सुबह सुबह के, जो हाई मिलता है कि अचीव समथिंग, यू हैव मेड अच्छा वो समथिंग, मिलता है. हाँ वो मिलता है. अच्छा वो मिलता है. ठीक है. और दूसरा ये भी होता है कि आप दोबारा बिस्तर में नहीं घुसते. ये Oh, बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपने कुछ 5 मिनट लगा के बिस्तर बनाया, आप दोबारा बिस्तर में नहीं घुसते. दोबारा आपको होता है यार अगर बिस्तर में नहीं जाना, क्योंकि बहुत सारे लोगों में जानता हूँ उठते हैं वॉशरूम जाके दांत ब्रश करते हैं, लाइक नहीं यार चल दोबारा बिस्तर में पड़ जाते yeah, for a हैं. power nap. No, I think it's not a power nap thing. If you like if you're waking up from like in the morning and then you go back to bed, you're just lazy. It's Yeah. not power nap. I have nothing against power naps, like nothing. Okay. Like I respect people who can take time for a nap. So yeah. Okay. Well, with your conversation, I feel like you've been in different relationships. Yeah. You, are you in one right now, or are you single? That's why. Why do you think That's why you are like 7 a.m. में उठ के जाता हूँ, yeah. because there's no one holding you back. Yeah. Okay. I'm like pitching my idea of like morning cuddles to this girl I like, but I don't think she's into it. She doesn't like the idea. So yeah. So I've been like convinced her fully कि यार morning cuddles. So I don't think she likes the idea. So that's why I'm still single. So maybe I have to change my strategy. Maybe cuddle some other time, but not in the morning. But that's important. देखो यार देखो किसी मुझे कहाँ पढ़ा था मैंने कि if cuddling that gives you this then dopamine होता है, dopamine release होती है, पता नहीं क्या release होता है. It's like it extends your increases your life expectancy sort of. Oh, Cuddles are very important. Yeah. very important. Yeah. I think Lahori is. I was recently watching this podcast with Umar Saif, and he mentioned कि भाई लाहौरी को 1.5 अरब रुपए खाना खाना महीने में. Okay. 1.5 अरब रुपए is a lot of money. Yeah. और फिर लाहौरियों का वो बड़ा हाई है कि कमेटियां डालनी. ठीक है, कमेटियां हर एक ने डाली. ठीक है, वो छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े तक. एंड उन्होंने वो भी बताया कि यार हाउस 3 अरब रुपया 3.5 अरब रुपया वो कमेटियों में सर्कुलेट होता है, वो आपके सेंट्रल बैंकिंग उसमें नहीं आ रहा. हाँ. ठीक है, तो अगर लाहौरी जो है वो अगर खाने पे खर्च ना करें और कडल्स पे खर्च, यार कडल्स पे तो ना ही करें यार, कडल्स पे तो ना खर्च करें. जितनी इस मुल्क की आबादी हो चुकी है ना भाईजान, ये इनको कडल्स की तरफ तो आना नहीं चाहिए. Yeah, well, I think खाने पे सही है. हाँ खाने पे रहें. That also gives you a bit of dopamine in your comfort वो food करें and you're वो. हाँ, happy. आई थिंक नहीं, कडल्स की तो इस मुल्क को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. ऑलमोस्ट लाइक 240 million, more than 240 million in fact.
and yeah, so no cuddles for Pakistani awam. Okay, Yeah. so cuddles are important for you because आजकल in this dating era, Hmm. everybody has their own game, मतलब checklist कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए. Hmm. I think we are very picky or the pool is very shitty. But so what do you have a checklist कि ये चीजें होनी चाहिए? यार इतना कोई लंबा चौड़ा नहीं है मतलब यार one thing that's okay I have this thing like on Bumble I came back in March 2022 and I started like I had Bumble वहाँ पे Okay. वापस आके मैंने कहा चलो पाकिस्तान का पोल देखते हैं क्या ठीक है मतलब डेटिंग ऐप में मर्द भरे होते हैं जो रेशो है वो मर्दों की बहुत ज्यादा है ठीक है Yes. और खवातीन ही कम है Yeah, because it's तो Islamic हाँ Republic. इस्लामिस्ट रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है Yeah. इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ठीक है तो वो बहुत कम है तो I now like over the span of like almost 1.5 years I've seen के pool बट तो ये जगह बहुत सैचुरेट हो गई हुई है क्योंकि पहले टिंडर था और टिंडर पे अजीब तरह के आपको लोग मिलते हैं तो देन बम्बल में there's a good mix of both like I'm not gonna go for a bad people like my preference or something like I'm not gonna like start shaming people like all the people on dating apps are like Bumble off topic I don't know why I started talking about taxes like plugging but pay your taxes guys like pay your taxes yes and यार मिक्स है वहाँ पे अच्छे लोगों का बुरे लोगों का my checklist is always I sort of most people I talk to on normal they say like you intimidate us I was like how so I लड़कियां क्या सवाल पूछेंगी nothing against women but like some of them what's your favorite color Because it's the most general question. आप You know. रहते कहाँ आप रहते कि आप रहते हैं दोनों जज करने ना कि आप हाँ रहते कहाँ हैं. मैंने आपसे पूछा मैं कहाँ रहता हूँ मैंने नहीं बताना आपको मैं कहाँ रहता हूँ मतलब why do you want to know what's my favorite color क्या करना है मेरे Maybe favorite they color want to gift you later something related to it. मतलब You they know. can ask me later ना कि what's your favorite color why do you want to ask अभी what's your favorite color so I generally ask people like women के what are you reading these days That's what you ask. हाँ कि क्या Okay. पढ़ रहे हो भाई कुछ ना कुछ तो पढ़ते हो अखबार पढ़ते हो किताब पढ़ते हो कुछ ना कुछ तो पढ़ते हो बता नहीं we don't read anything मतलब this is like and I've seen women like unmatching me after that question like that's a fair question भाई क्या पढ़ रहे हो Actually, so their question is not fair of asking because you know when you ask that what are you reading, हाँ basically you're also judging and analyzing what kind of content she's into हाँ or what she likes or yeah stuff. yeah So with that question of what favorite color is or where do you live, if I say blue then maybe you're mellow type, you know, because blue represents that. You're a bit mellow and blue, चलो ठीक है ये sad. भी चलो अब ये पूछना कि आप कहाँ रहते हैं इससे क्या Because जज they कर want रहे to हो judge कि where कहाँ you रहते हैं live. ये लड़का क्या कि कॉर्नर प्लॉट वाला कर रहा है आपका 2 कनाल का है आपकी बहनें कितनी है आपकी अम्मा है यहाँ पे so yeah I don't like that I'm just kidding but I do get like very sometimes frustrated कि भाई मैं जहाँ भी रहता हूँ मतलब this you can't be like first like 3 questions or like just ask me like what do you do like what are you doing here like I recently met this my recent match she was very sweet and so I have devised this whole idea of how speed dating works if you don't like someone आप उनको पहली डेट में ऑफेंड कर दें किसी तरह अपने व्यूज से तो आगे बात जाए ना Okay. ठीक है वो दूसरी डेट तक ना जाए अगर आपको This बंदा what is पसंद this called? Speed dating. this is in my whole situation in my whole डेटिंग सारा प्रोफाइल में Okay. मैंने उसको स्पीड डेट कर दिया कि यार आपको बंदा नहीं पसंद आ रहा आप कोई ऑफेंसिव बात कर अपना वर्ल्ड व्यू जो है ना कोई थोड़ा मॉर्फ करके वो बता कि यार ताकि कोई पीछे हट. हाँ तो वो खुद ही पीछे ठीक है अगर औरत वो जो बहुत सारी खवातीन पूछनी औरत मार्च में क्या करेगा लाइक ब्रो औरत की स्पेस होनी चाहिए बहुत जरूरी है ठीक है मर्दों के सारी स्पेस मलिन है औरतों का अगर एक 8 मार्च को निकल आती है तो क्या बुराई यार निकलने दो ना वो भी इंसान है करने दो उनकी भी स्पेस है सब कुछ उनके मतलब होना चाहिए ठीक है तो दिस गर्ल आस्क्ड मी व्हाट्स योर टेक ऑन औरत मार्च आई वाज लाइक नो 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 मैंने होना नहीं चाहिए भाई होना नहीं चाहिए होना नहीं चाहिए मैंने कहा जरूरत नहीं so she was like यार ये तो नहीं And then she got offended. हाँ जी like यार ये तो बड़ा मिसोजिनिस्ट था तो
That's actually very smart thing to do. हाँ वही ठीक है, आपको नहीं समझ आ रही। तो अभी रिसेंटली कुछ 2 हफ्ते पहले आई वेंट ऑन अ डेट एंड I started coloring by it, as you saw. Yeah, I just saw. And then I find it very therapeutic. It's like very nice. It's like I'm off social media. And not off entirely, but like my time has like increased exponentially. I find time to color and everything. So she was late, 20 minutes late. So मतलब मैं जल्दी टाइम पे पहुंच गया, वो लेट। तो मैंने कहा चलो लेट में बस्ता उठाया, मैंने कलर करना शुरू कर दिया। तो she showed up and first she couldn't recognize me. She was like ये तो बंदा वो कलर कर रहा है, तो वो गुजर के चली गई। फिर she messaged me, कि वो ना मैं एलिवेटर के पास बैठा हूँ भाई, पास। And then she was like, and then she said something. She's like, I wasn't expecting that you would be coloring Coloring. on a date. Okay. So मैंने मतलब me being me unfiltered, I was like, I wasn't expecting you'll be 20 minutes late. वही ना, वही ना, Okay. तो वही ना, तो आप मुझे कर, तो वो उसको फिर मुझे शक्ल से अंदाजा हो गया कि भाई कि मुझे हुआ भी कि यार ये नहीं कह रहा। She was cute, so I was like, यार I shouldn't have said this, but I could I sense think it. फिर वो चीज आगे गई नहीं आगे गई नहीं, उसे डेट के कोई आधे घंटे बाद जो था ना, आई थिंक शी गॉट एन ऊबर, एंड ऊबर में उसने मैसेज कर दिया कि आई डोंट सी दिस, आई थिंक यू शुडंट कंटिन्यू। मैं कहा ठीक है, मतलब सही है। because you color and she's not on time. I think she wouldn't have mind that whole coloring thing, but the way she said it was like Offensive. नहीं ऑफेंसिव नहीं था यार। देखो मेरी मेल ईगो हर्ट हो गई यार। मतलब ये क्या, तो मुझे थोड़ा हुआ भी यार, देखो यार क्यूट लड़की थी, इसको ये ऐसे नहीं कहना। सो आई वाज लाइक यार क्यूट लड़की थी, ऐसे कहना नहीं। तो यार क्योंकि वो क्यूट है, उसको कहना नहीं चाहिए ऐसे। यार Yeah, I think कि ये थोड़ा सा ना because being a guy coloring yeah is not normal here in Pakistan. अच्छा हाँ वो है ना, हाँ ये क्योंकि मतलब you need to be like a soft Londa type. लड़के कलर कौन करते? लड़के कलर नहीं करते, लड़के कलर नहीं मर्द को दर्द नहीं, मर्द को ठंड नहीं लगती। So I हाँ, क्योंकि recently someone was like at my workplace, यार I was wearing 2 layers and I was cold, ठीक है, अल्लाह जानता है I was cold, ठीक है ना, I was regretting कि यार दूसरा स्वेटर पहन के आना चाहिए था। तो my colleague was like यार तुम्हें ठंड नहीं लगती, so I could have said लगती है, I could have accepted the fact कि ठंड लगती है, but I had to play macho. I was like नहीं यार ठंड नहीं लगती, ठीक है। And then after a while I was like doing this, and then she was like यार ठंड तो लग रही है तुम्हें। So for us to accept takes a lot of courage, so we sometimes don't accept. नहीं वो कर लो अब तो। I think people do accept and it's fine. मतलब our older generation does not accept these things, but I think male and female सब इंसान हो यार, हर बंदे हाँ की same exactly, feelings सबको हैं, ठंड लगती है, सबको ठंड लगती है, सबको दर्द होता है, सब कलर्स कर सकते सब कलर कर सकते हैं। ठीक है, I don't know, what's your take on if you're on a date or like you're with first or second date and you're nicely dressed, this is hypothetical, Okay. and you're walking like you're walking somewhere, like you're going on a walk, or the guy is like dropping you home, and then you're cold, Okay. and the guy is like wearing a very nice jacket, and then do you expect the guy to like अपनी जैकेट उतार के आपको दे दे कि यार ये ना बहुत फिल्मी सीन है। हाँ, लोग ना मूवीज से इंस्पायर होकर सोचते हैं कि अगर मुझे ठंड लग रही है तो वो लड़का जैकेट मुझे दे, तो उसको भी ठंड लग रही होगी ना, उसको भी ठंड लग रही है। दूसरा आई पर्सनली डोंट लाइक दिस थिंग बिकॉज उसकी जैकेट है, देन यू नो मतलब उसका है ना सीन, मैं क्यों उसके कपड़े पहनूं या उसके जूती पहनूं। हाँ ये तो है, क्योंकि मेरा जो सबसे बड़ा फिल्मों से मसला है ना कि वो लड़की को ठंड लग रही है, लड़के ने जैकेट दे दी, लेकिन मेरा एक सबसे सवाल होता था लेकिन लड़की ने कभी जैकेट वापस की उसको कि नहीं। ये मेरा सवाल है यार, वो लड़के वो दिखाते नहीं ना कि वापस करके दे, जिसे वापस दे दी। आई थिंक वापस देते हैं when the relationship ends. अच्छा, some people do, some people like no, because I know this girl, like she's still on my Instagram, like I did ask her, like she never sent my jacket back, like I was being like, you know, थोड़ा सा यार चलो ठंड लग रही है जैकेट दे देते हैं, so she took my jacket. I was like अच्छा ये किसी घर अंदर जाके मतलब जब सीढ़ियां पे जाएगी तो दे देगी,
So I was also like being You were sweet. waiting. I was waiting कि भाई जैकेट तो वापस कर दें, तो वो उसने नहीं की, तो वो आज तक नहीं की. और ये कितनी पुरानी बात It's है? been 3 years now. So And why I don't think you message her like give me a she doesn't live jacket here. back? She lives in like Belgium. Mm. That is sad. That is very Did sad. you like yeah. that jacket a lot? It was a nice jacket. It was a comfortable jacket. It was an expensive jacket, but she never gave it back. And I was like, acha, maybe somewhere in a story, you know, women like, okay, I'm not saying women, like some women, or like they shop from like men's section. Yes, they do. Yeah. And so I was like, acha, yaar, chalo theek hai, uski size, it's a, theek hai. It was, the jacket looked nice, nice. So मैंने कहा शायद इंस्टाग्राम स्टोरीज में कहीं सपोज मुझे नजर आएगी जैकेट, तो मैं पॉइंट करूंगा कि यार ये जैकेट होगा. तो उसने कभी स्टोरी भी नहीं लगाई कि ना, स्टोरी भी नहीं लगाई, पोस्ट भी नहीं लगाई. सब लाइक यार चलेगी. So you're the kind of person on relationships who tries to act macho and No, fix no, in no, 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 drops no, and no, no, no. That, I think I have stopped doing. I will drop you home, and I'll drop you home, and I'll also pick. Like I have this thing. Okay, correct me. Like I don't know what's your take on this. One shouldn't know about, like, especially men shouldn't know where the girl lives that's true. unless and until they're like, अच्छा यार अब थोड़ा serious की तरफ जा रहा है, हमें 3-4 दफा मिल लिया, 5 दफा मिल लिया, and then unless and until the girl is comfortable, like यार मैं यहाँ रहती Okay. हूँ, आप बता दें मॉडल टाउन में डिपेंड, अब इतना बड़ा है, अब ठीक है, अब किस ब्लॉक में, ब्लॉक भी बता दें यार, चलो ये सेक्टर में रहते हैं. But आप not घर ना exactly हाँ, location. तो आप देखें, I have this very serious thing, like I don't appreciate like people when I like first date, can you drop me home? No, no. Get an Uber, जहाँ जैसे आप आई आप वैसे जाएंगे. I don't want to know where you live and all that. I'm not dropping you home because like we're not that close. So What if she asks you like, do you bluntly say no? यार unless and until के बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही है, और या बहुत ही फॉग है, या कुछ इस तरह का मसला है, तो फिर then I'll think. I've done that. बारिश हो रही थी एक दफा, तो I dropped this girl home who's my friend now. So yeah, I did One drop. it's a no. One I would say no कि नहीं भाई, माधुर नहीं. अगर मैं मॉल टाउन जा रहा हूँ, आप रहते हैं पता नहीं, I don't know where. Beria. Beria town. No, 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 no. Beria town is like, I wouldn't think of it. No. Even if she says the word, she says B, I'm like, no, no, no. 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 Yeah. Actually, there are a lot of guys who literally give pick and drop service to their girls and Sure. always paying and मतलब वो एक होता है कि जो लड़का है वो हाँ. responsible होगा और उसका take care करेगा, and this is the kind of viewpoint that girls have and they're looking for it. Sweet. I get it. I get it. लेकिन देखिए यार, मेजोरिटी जो ठीक है मर्द हजरात, मैं स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा, लेकिन वो अपनी खुद भी तो दे कांट टेक केयर ऑफ देमसेल्फ. अगर आप पाकिस्तानी मर्द हैं जिसने मैं ये नहीं कह रहा सब ऐसे होते हैं, लेकिन जनरली आप देखते हैं, आपका भी बहुत सारे लोगों से पाला पड़ा होगा मर्दों ने, जिनको जी मुझे तो अंडा नहीं उबालना, मुझे तो अंडा फ्राई नहीं करना, मुझे तो चाय नहीं बनाना, तो ठीक है नहीं, मत सीख लो ना यार, मतलब. सो इफ यू एक्सपेक्टिंग लाइक I think उनको आता है बस वो हाँ वो वो act भी कर रहे होते हैं कि acting मुझे like नहीं आता. मैं तो किचन में कभी नहीं गया. हाँ, I it's don't know like what to do. unmanly to go into the kitchen, like. Yeah, it's not macho enough. हाँ, and they'll be like, मैंने सारा मास्टर शेफ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जो भी सारे बिंज वॉच किए हैं, लेकिन they'll be like नहीं मुझे अंडा नहीं बनाना. So this whole idea that men have to take care of women, like no, and also this other way around, it shouldn't be the case. ठीक है, you should मतलब make things work out among yourselves. ठीक है, आपका मतलब let's say if you don't feel like, if your partner doesn't feel like cooking that day, like ठीक है यार चलो we'll order something, well I'll cook something. ठीक है, this shouldn't be कि हार्ड लाइन नहीं होनी चाहिए कि भाई आप ही बनाएंगे या मैं बनाऊंगा, दोनों कर मिलके कर लो ना यार, मतलब क्या हो जाएगा. एंड दिस होल आइडिया कि तो मर्द ये नहीं कर सकते घर में, ये नहीं, ये तो औरतों का काम है and all that. It's not like you have to break that stereotype. भाई मिलके करो ना यार. और दिस होल आइडिया कि यार I'm dating someone like I have to be like there for you all the time. नहीं भाई, I can't be there for you all the time. Like मेरे भी तो मसले हैं ना, मतलब I want someone to be there for me. Like it has to be mutual. कि मैं आपकी मतलब खिदमत करूंगा, मैं आपका ख्याल पिक एंड ड्रॉप दूंगा, ठीक है, मतलब that's पिक एंड ड्रॉप देना, मतलब it's okay. मतलब I'm not saying it's like I'm not against it. Like fuck, दोनों को प्लान है, if you're going for dinner and everything, and you're like not in a live-in relationship, जो कि मुश्किल होता है इस मुल्क में. Yeah. हाँ, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को पिक कर रहे हैं तो फिर आप ड्रॉप भी कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि भाई रोज नहीं हो सकता.
वो लोग ये भी तो करते हैं ना, वो पेकिंग अगर उसको ऑफिस छोड़ रहे हैं या wherever she wants to go or her errands, we will do that. It's all And wrong, man. so, which I don't know why. Maybe they have a lot That's of. intense. No, I think no, that's intense. Like that shouldn't be. ठीक है, if somebody's doing it for love and like with love, so it's like uh, I have nothing against them, but I don't see myself like that. Like, and also this like one of my good friends, like he's getting married. He's already married. निकाह हो चुका है कोई. So him and his wife have this relationship. They message each other like, "I'm doing this now. I'm doing this now. I'm going here now. Where are you now? What is happening now?" Well, why do you have to do that? मतलब ठीक है, I'm at work. ठीक है, okay. बस हो गया वो ना. अपनी दिन की सारी एक्टिविटीज बता रहे होते हैं ना कि मैंने अब ये किया, मैंने ये किया, क्यों? ताकि मतलब वो आप एंड में मिल के घर पे आना है ना, आपने रात को घर ही आना है ना, आप बता दें. मतलब इतना क्या है, मतलब कुछ सर्वेलेंस चल रही है क्या? आप मतलब क्या आप मतलब रात को आके बता सकते हैं ना कि भाई मैंने दिन में ये किया, मैंने लंच के साथ किया, मैंने कुछ मतलब जो भी आपके दिन की सारा जो होता है या रुदाद होती है वो आप आके रेंट में सुधा देना घर पे आके, भाई ये किया. तो फिर वो तुमने पूरा क्या? दिन बात ना करें. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा बात ना करें, तो बात करें, लेकिन स्पेस देखो यार, स्पेस बड़ी इंपॉर्टेंट है ना. या नो ठीक है, आई एग्री. लोग जो है ना, वो आज जो मुझे सबसे चीज इरिटेट करती है इन चीजों में, एंड आई आल्सो सी पीपल डू दैट, एंड व्हिच actually makes me not go into relationships. अच्छा, ओके. कि they're always relying on each other and they're 24/7 contact में होने, हर वक्त मैसेज करने, और अगर आपने रिप्लाई लेट किया तो कहाँ थी, रिप्लाई क्यों नहीं हाँ किया, वही ये हाँ. वो. एंड देन और आप कितनी बातें करोगे. तो हाँ आई फील है कि जब ये एक्टिविटीज बता रहे होते हैं ना, ये लोग इसलिए बता रहे थे बिकॉज दे आउट ऑफ टॉकिंग अबाउट स्टफ, हाँ तो दे लाइक, ओ अब खाना खा रहा हूँ, ओ अब टीवी देख रहा हूँ, हाँ क्या बाथरूम, हाँ ओ बाथरूम जा रहा हूँ. हाँ. ये किस किस्म की कॉन्वर्सेशन, बट पीपल एक्सपेक्ट दैट रिलेशनशिप्स मतलब 24/7 in contact, text हाँ. हर वक्त करने, कॉल पे, रात को भी कॉल पे भी बात करो apparently. Yeah. That's ridiculous. Like no calling, man. Like no. If you are in a relationship, like you can, like one of our professors, like God bless him, was a very nice guy. He used to say this, yaar, call me. You can only call me when you're like there's an emergency. And his definition of emergency was like if you're dying. Yeah. So I think आप अगर मैसेज में बात कर रहे हैं, ठीक है, अब बच्चा वालों का अल्लाह भला करे वॉइस नोट भी आ गए now you can apparently Yeah, share screen and I don't know for what, but and then calling I think should be forbidden. Like forbidden. yeah, in relationships, like unless and until there's like an emergency or there's like plan or like you're confused or you're lost in a shopping mall, you don't know where to go, you can't find a store, or like you have to pick flowers for your like partner, then another चाहिए कौन से चाहिए, which one you think one, or if you have like happy birthday cake पे लिखवाना तो उस पे कॉल कर दो यार मुझे क्या लिखवाना है cake. Other than that, there could be also other emergencies like grave ones, but then I think there should be no call. Yeah, I think WhatsApp was enough. Texting is enough. Texting is enough. WhatsApp like texting. Yeah. I feel like अगर आप, for me it's more like I would be more comfortable if texting आप ना करो, because you're busy in your own thing, you're doing stuff. End पे जाके अगर you're free, so you Yeah. can call and catch Yeah. up and just. Yeah. But this whole idea that you have to call lunch पे, अब that's मैं ये कर रही हूँ, अब मैं वो कर रही हूँ, हाँ यार मैं ये मुझे कर रहा तुम्हारी हूँ. याद आ रही है देख के. No, हाँ वो हाँ ठीक है वो yeah वो आप क्योंकि यार okay I have to share this with you. I once messaged someone like there was this girl like it was remotely, like not remotely. Remotely? I think that What it does was that like even I was mean? seeing like I was seeing this girl, I was talking to this girl because this girl didn't have the Situationship. it wasn't even a situationship, like she okay I don't know if I should talk say this but she was interesting and everything, but she uh, had massive trust issues. Oh, okay. So if you're not responding, like I started working at lunch and I was like still figuring out कि भाई क्या हो रहा है क्या. So I wasn't like couldn't be on my phone all the time because like you are being watched because it's first beat or like first Yeah. आपकी हर movement जो है वो देख रहे होते हैं यार क्या कर रहा है क्या.
तो I wouldn't just use my phone because I was like यार पता नहीं क्या work ethics है, खैर क्या ही work ethics है. तो उस वक्त मैं देख रहा था कि यार क्या work ethics है. तो I was like यार I have to be. So we were like we were talking at that moment. We were like Okay. dating. We were dating. Talking Comes like stage. talking stage. ठीक है. And so I called, like we met for coffee and everything. I was like, she was like, so we're dating now. I was like, no, we're talking, in the talking phase. And she couldn't understand. She's like, no, we are done talking. I was like, no, this is Done talking. We are like done talking. We are dating now. I was like, no. So in her mind, like she dated me. Okay, and in But we your never mind, dated. no. We never dated. We never weren't in a relationship. I was like talking for like 3 months or something, 2 months, 3 months. And then she was like, So if you're talking to somebody for 3 months, तो वो अगला बंदा सोच सकता है ऐसे. नहीं आप उसको सोचने का मौका नहीं दो ना. आप उसको क्लियर कर दो कि भाई यू नॉट डेटिंग, यू लाइक टॉक. So 3 months से सिर्फ talking stage चल हाँ रही है. देखो ये जो होता है ना, ये जो आपका फेज होता है ना, दिस लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक योर this is very important, I think. Like the talking phase is very important. You have to be clear about And it. how long it should be? Depends. I think it could be a month. It could be like for some people it could be 2 weeks. For some people it could be also like 4 months or 3 months in my case. Oh, But in your case, okay. yeah, it depends. It varies because if you feel that person is uh, the right choice, the right person for you, not the choice, but the right person for you, that like the things like move a bit तेजी से, Okay. rapidly. But if the person like you, आप थोड़ा आपको लगता है कि यार यहाँ ये मेरे लिए, फिर वो कैसी को बात कर देते हैं तो आपको लगता है नहीं नहीं यार, you take 7 steps back and then So I think this is what was happening with this girl. Like the moment you felt okay, there's something, there's potential, and then something would happen, and you'll be like, no, No. you have to go back. Yeah, नहीं, back to the drawing board, no. Okay. And then so yeah, so she like I think as much as So I want. पता कब चलता है कि नहीं this is not gonna work out, और यही तो नहीं हुई है कि आप पीछे step कर रहे हो, फिर वापस जा रहे हो, फिर पीछे जा रहे हो. ये So बैक एंड फोर्थ भी ज्यादा नहीं करना चाहिए. या हाँ. फिर अनसर्टेनिटी जो है ना, ये आपकी भी आपको मजीद That's unfair to the other person as It's well. also unfair to yourself. Like you're Yeah. not doing like you're not like, I think you have to be clear with yourself कि यार ये काम करेगा कि नहीं करेगा. You can't go back and forth because it also hurts the other person, but it's also hurting you to an extent. हाँ, so फिर पता कब चलता है कि no it's not, like when it for you it's कि नहीं this is not gonna work. I don't know if I should say this. You would like, she was a loud chewer, like she would chew with her mouth open. So yeah. So I was like नहीं भाई. A bit I mean. was like नहीं भाई, ये नहीं चल रहा भाई, ये तो नहीं करेगा, ये काम नहीं, ये नहीं हो सकता भाई. And then yeah. So you could have told her कि it kind of irritates me. Yeah, that was when you one of the know. things that did irritate me. But she was 30, and if you haven't realized, अभी तक के you're a loud chewer, then bro, like I can't be the one के मेरी जिंदगी में एक लड़का आया, उसने मुझे बताया कि लड़का नहीं, आदमी आया. I can't categorize myself as लड़का anymore. I'm 34. So एक बंदा आया, उसने मुझे आके बताया कि you chew loudly. So yeah, I think yeah, that was one of the things, and the other things I won't discuss that because like ये online जा रहा है भाई, पता नहीं छोटा सा law है तो. Okay. So हाँ. that was a no. That was a no. That was a very hard no because yeah, in every if the person can't hold a conversation, Yeah. even if you're talking about randomest things, if you're talking about socks, if you're talking about like couches, if you're talking about clouds, if you're talking about anything in the world, like talking about like how chai was like made and all that, you're talking about cake, you're talking about anything. About carrot cake, because I remember that was the first time when we met, you were talking about carrot cake. Carrot cake, yeah. Like long, and I was like, why are you talking about See, that? But yeah. okay. So like if you can't have a conversation like cakes or anything in the world, so there's no point. I'm not saying like you don't have to have an intellectual conversation All the time. all the time. ठीक Yeah. है, कुछ दिन में एक आध दफा कुछ बात कर ली, ठीक है, मुल्क के ऊपर बात कर ली, या आपको सियासत के ऊपर थोड़ा जितना हमारे मतलब I went on like multiple dates. I forget people how many dates I went to. Like I think so yeah, and then people judge me ke, so I think it's valid because I find a masla in all of them, and I'm sure they also find masla. Yeah. That I'm like, in So why any do you state. find masla in all of it? Yeah, Is it a you problem?
I think it's a very me problem. I think because like you can't like have if अगर आपको सबसे मसला ना तो आप पे मसला है ये भी तो है ना सेल्फ अवेयरनेस है सेल्फ यहाँ पे। अवेयरनेस है सेल्फ गुड। अवेयरनेस है भैया सेल्फ अवेयरनेस है कि अगर आपको सबसे मसला है तो आपका मसला तो पता चला क्या मसला है यार I think these minor things like sort of uh, make me uncomfortable like I think I'm one of those people minor inconveniences would be like यार ये minor minor inconvenience? inconveniences man I'm body and then I am always okay I'll also have the stance कि भाई अगर आप you're going on a date you have to first date has to you have to split bills Split bills. split bills पे तो वो Okay. just bill splitting पे मामला आता ना तो the girl is like यार ये तो like a red flag है इसने I like okay I respect women who show up like nicely dressed up on a first date but वो आपकी अपनी मर्जी थी ना ठीक है और वो आप अगले से एक्सपेक्ट कर रही है कि वो भी तैयार हो के आएगा मैं नहीं तैयार हो के आऊंगा भाई मैं दफ्तर से अगर वापसी पे आ रहा हूँ ठीक है तो मैं दफ्तर से पहले घर जाके तैयार टक्सीडो पहन के नहीं आऊंगा नॉट दैट आई हैव अ टक्सीडो बट इफ दिस is how I show up it's like okay Okay. you want me to wear like nice clothes and everything these are nice clothes okay in mind like Okay. so I can't be dressed up so this girl multiple women they So, I know I wasn't dating them simultaneously उसका ग्रुप डेट नहीं थी लेकिन वो काफी सारी खवातीन ने कहा you don't make an effort हाँ while dressing yeah up, yeah yeah and you so don't pay. first date पे you shouldn't pay the bill you should split always and so yeah that's one of the What about second date? सेकंड डेट पे आप देख लेते हो यार कि देखो सेकंड डेट में हमारे साथ तो बहुत मामला जा भी नहीं रहा तो हमने उसके बाद सोचा so yeah this has now turned into a therapy session so second date में तो मामला जा भी नहीं रहा तो उनको लगता है कि यार First date में मसले समझ आ जाते हैं। यार फर्स्ट डेट पे ये आप कर लेते हो क्योंकि if you can't hold like have a conversation so there's no point like going on to the second date I know I think ये बहुत common issue है आजकल this era, which because a lot of people are dating and there are so many dating apps and so many ways to meet new people and go on dates. और बस फर्स्ट डेट के बाद लगे मैंने माय फ्रेंड्स एंड दे आल्सो टेल मी कि बस फर्स्ट डेट के बाद बात आगे नहीं जाती बिकॉज बहुत ज्यादा मसले नजर आते हैं एंड इसी तरह फिर कोई भी नहीं मतलब यू नो सो आई फील है कि हम लोग शायद इतने ज्यादा पिकी हैं और सेल्फ अब्सॉर्ब हैं थोड़े से लाइक दिस जनरेशन के हमें कॉम्प्रोमाइज भी इतना नहीं करना आता आई थिंक सो और ना ही हम वी एनालाइज के the good points more और balance it up कि pros और cons कितने हैं या मुझे ये भी चीजें अच्छी लग रही हैं तो ये अगर नहीं भी सही तो let's just ignore पर वो नहीं है I think हमारी generation में I also feel like मेरे में भी नहीं है I think in जितना हम like we're old now we're getting like in 30s which is very sad but हमारी personality इतनी ज्यादा built up हो चुकी है strong हो चुकी है कि we can't even adjust or change so maybe that is why कि हमें हर बंदे में मसला लगता है और हमें लगता है कि you know ये नहीं सही ये नहीं सही ये नहीं सही I mean that's what I think yeah to an extent you're right to an extent because यार होता ये कि आपको ये है ना कि राइट ये इसने राइट स्वाइप पे कोई और भी तो होगा ना ये नहीं तो कोई और होगा हाँ so there's so many options you have so many options like ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये it's like you're shopping like you know going shopping okay I don't like this I don't like this shirt I don't like this stuff let's go like let's look for more stuff you know or load more items yeah other websites will load more items so I think it's also that and I think I'm not an expert on this but मुझे ये लगता है कि यार एक तो options का वो भी सीन भी है and then there's also this whole idea how should I put it like it's okay I don't want to like sound wrong like yeah because like I know the woke brigade would like run against me if I say it because I also want to get on internet and all that but this whole idea कि यार कोई अगला होगा मतलब ये नहीं तो कोई और ये नहीं तो कोई और हाँ ये है ये बहुत ज़्यादा like there was this person who was talking to recently a colleague तो वो खुद कंप्लेन कर रहा था कि यार I'm sick of
meeting different people all the time, or Yeah, it is draining. yeah, and it affects my mental health as well Does. and stuff. So फिर मैंने उससे कहा कि then why are you meeting multiple people, or मतलब choose one, yeah, be with one. But I mean, you're a good enough person, you can be. So he was like, yeah, I can, but then there's this thought in my head, कि what if I'm missing out on something else? That's very true. That's very true. Because there's always like something better. Like, there's someone better out there. Like, मैंने explore नहीं किया. But that is very shallow as well. I would say. Also, अगर आप वही explore या उस सोच में आप लोगे तो फिर you will never settle down, or you will never be. You will keep on, because there are a lot of things to explore. Yeah. And you will keep doing that. So if it drains person's mental energy and mental health effect होती है, because बहुत सारे लोगों की होती है ना, which is but सारे लोग therapies ले रहे हैं इस मामले में. They have attachment issues, they have abandonment issues, and everything. So, but then again, there's nothing, but they have this कि नहीं वो चीज होगी तो मैं मिस कर दूंगा. Like FOMO हो रहा होता है. हाँ, exactly. That's what it is. हम बहुत fucked up generation. हाँ, लेकिन यार हाँ ये है तो मुझे लगता है कि जितनी डेटिंग एप्स हैं the more single people actually, because the whole idea of like you meet someone like in a physical space, because यहाँ पे वो avenues ही तो बहुत कम हो गए. मतलब क्या आप कहाँ जाओगे, मतलब लोग मतलब बाहर पाकिस्तान से बाहर मतलब you go on a pub or you go on a club and you meet people, you like at a concert or a museum and everything. I know one of my friends like met her like love of life in a museum. This guy was like standing there like in front of a painting, and she started to like यार क्यूट लड़का बात करता है तो बात की सारा कुछ ठीक है. And then was like the guy was like I want to grab coffee after so lunch after. So they started talking and then she was there in Amsterdam for a week. कुछ दाखिल 2-3 दिन थे तो लड़के ने कहा यार मैं फ्रीक्वेंट करता हूँ म्यूजियम्स तो वो मेरे साथ चलो. तो वो चलते गए and then they lost touch and then after like 2 or 3 weeks the guy was like I'm coming to Lisbon, do you want to hang out? And then she was reluctant कि यार पता नहीं तो ठीक ही ना हुए मतलब पता नहीं म्यूजियम्स में नहीं पता नहीं. So and then she showed up and I fell in love कि यार हाँ ठीक है मतलब कि they fell in love and so I think like the whole idea कि आप लोगों से physically मिलें space में ठीक है वो उसका अलग वो बेहतर होता है. वो बेहतर होता है. You get to know them. I'm also very against dating apps for chalo. Yeah, but I think like there are more dating apps. up to Bumble, Tinder तो था मतलब OG was like Tinder उससे पहले भी कुछ होगा. फिर अभी पाकिस्तान में Hinge नहीं है. Hinge पे बड़े लोग मिलते हैं. मतलब apparently they're all the same. The parent company is the same. It's the same. Okay. And Tinder, Bumble, I don't know if it's like I'm not totally 100% sure on this, but I think it's the parent company is the same. Because Bumble gives the liberty to women to initiate the conversation first, and then anybody can. So Bumble was very successful. Like the initial girl can initiate. The girl can initiate the conversation. So it was very different. But like now, I think उनका जो charm था शुरू में कि यार ख़वातीन करेंगे तो वो था. That's why it worked. Yeah, that was a USP or whatever. So, but I like the fact when you said it's more of a shopping, because आप यही होते मैं तो इसी friend भी होती हूँ कि लोग they're like just looking and judging you by your appearance. और ये अच्छी है ये प्यारी है नहीं ये नहीं सही तो अरे प्यारा है इसकी abs है हाँ इसकी muscles हैं इसकी cute smile है. अब फिर हम मिलते हैं फिर उनकी आवाज अजीब से निकल जाती है तो yeah, something weird. आवाज के अलावा बहुत सारी चीजें जो they can like go very wrong. So moving towards the fact that these dating is difficult, finding a partner is difficult. My parents don't get that, but it is difficult. And I feel like finding a job is way more easier now. And it affects your mental health and sabki aajkal like everybody is going to therapies. And it's something very common. And I was noticing that you were also coloring downstairs, and you said that's a form of therapy. Yeah. It really fascinated me. How does coloring, helps you? Yeah, I don't know when was the last time I did something like tactile. इस तरह से हाथ से आप कुछ कर रहे हो, ठीक है. मतलब I have quite a lot of like screen time. Like my screen time like exceeds like maybe more than 7 hours, 8 hours, 9 hours, something like that, which is insane. I think
लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये दिस इज नॉर्मल, लाइक समटाइम्स इट्स लाइक मोर देन 12 hours for some people. I know my brother has the screen time more than 13-14 hours. Okay. And so it's like I found it like very draining because it does mean staring at the screen and like video editing, shooting something like that. And then So it's I more of a break for you. it's sort of a break because I don't get to look at a screen. I would call myself a social media addict because if I spend like 4 hours every day, that's not a healthy amount of social media. And I was doing that just on work, like sharing memes with my friends and everything, watching like mindless reels, watching mindless content on Instagram and everything. God forbid, I'm not social. I'm not on TikTok, which is good. Yeah, same. And I never installed that app. But one of the things is कि ये तो टाइम भी कम करना था सोशल मीडिया पे, आपको लगता है कुछ आप टाइम ज़ाया ही कर रहे हैं, आप क्या ही कर रहे हैं, Yeah. वो नहीं कर रहे. तो But this is very addictive. मतलब रात को मैं 12 बजे ही हाँ बैठती हूँ and I'm just watching reels और 3 बज जाते हैं. हाँ I'm वही like ना, फिर shit. आपका स्क्रीन टाइम भी फिर वो वाला टाइम जिसमें आपको डीप स्लीप में होना चाहिए, Yeah. आप वो स्क्रीन टाइम मतलब मैं स्क्रीन के सामने स्क्रीन को देख, and so I think like coloring came to my mind because I saw this video on Instagram where this young guy like starting like her niece his niece is like sharing this coloring, ना कि color किस तरह करना है उसको सिखा रही है, very cute video. Okay. And this guy like coloring and I was like, yeah, this is nice. I like sort of forgot about it. And then my nephew, he's 11, so he shared a video like I was video calling him and he was coloring stuff. एंड बड़े ना तरीके से दो पेंसिल्स पकड़ी हुई हैं, एक स्विच कर रहा है दोनों, हाँ एक इधर रखी हुई है एक इधर रखी हुई है, तो लाइक ये क्या है, लाइक I'm coloring and he was very serious about it. He was like very Oh. good at coloring. Yeah, he has an artistic side. So and he had rubber and so पूरा ना, so वो मुझे हुआ कि यार he wasn't like talking, he was talking to me but he was glued to color. He was looking Okay. at me at the screen. He was like talking to me and then he was like coloring. So I felt कि यार ये थोड़ा सा ना वो है कि थोड़ा रिलैक्सिंग भी है, थोड़ा आप माइंडलेस, मतलब माइंडलेस नहीं कहूँगा लेकिन आप So when you're बहुत सारी चीजें, coloring, there's nothing going on in your mind. I think it takes time but like I do get to a point where I'm not for anything else. And that is what you want to achieve. या कि आप जो काम कर रहे हो आप वही करो, जैसे आप फिल्म कर रहे हो या फिल्म लिख रहे हो, अब तो आप अब आप नहीं कर सकते, you have to work and everything, you pay bills and everything, and I'm like juggling two things at the moment, three in fact. So वो उसमें जो टाइम निकालना, I think this was the time when I would like color सुकून से, तो ये तो थोड़ा एंजाइटी भी कम करता है, and also I think अगर आप जो आपकी जो सोशल बैटरी भी होती है वो भी काफी एग्जॉस्ट हो जाती है, कहाँ because you're Yeah. working around like so many people, not men, but it also training मुझे men निकले, लेकिन also it's also training working around men in my office, so yeah तो वो भी है, लेकिन Do they know you color? I color at work as well, like breaks Ah, में okay. या कोई ब्रेक आ गई कहीं बीच में तो वहाँ पे अपने कलर कर देते, डेस्क पे किताब निकाली कलर करना शुरू कर. So like if तो you're frustrated at the work and you don't like your boss, so you start coloring नहीं that. उसमें नहीं, आई थिंक नहीं उस तरह उस एक्सटेंट में मैं गया नहीं हूँ, आई थिंक वो कलरिंग उससे नहीं वो नहीं करती. सो आई लिसन टू म्यूजिक व्हेन आई एम फ्रस्ट्रेटेड एट समथिंग Okay, एट वर्क, आई लाइक लिसन टू म्यूजिक. आई थिंक कलरिंग इज लाइक मोर सॉर्ट ऑफ व्हेन आई एम एट पीस, थोड़ा बहुत सुकून है और थोड़ा और मजीद सुकून चाहिए तो आप कलर करना शुरू करें. I started doing this thing like I have two coloring books in my bag. So एक तो मैं खुद कर रहा हूँ, दूसरा जो है मैं कोई दोस्त है या वो उसको निकाल के दे दी कलर्स पढ़ने के, जो तुम भी कलर, तो वो भी हाँ यही होता है, तो वो भी एकदम वो शांत से हो जाते हैं, हाँ यार चलो कलर कर. So you can see कि यार they're not on the phone, they're like coloring now, and then people start enjoying it like the moment you like, because it also brings the kid out of them ना कि यार वो कलर Yeah. देख के ठीक है, और वो शार्पनर भी है कुछ, यार पेंसिल से क्यों नहीं लिखता यार, मुझे तो नहीं लिखा जाता. हाँ ठीक है पेंसिल से नहीं लिख सकते, या बहुत सारे लोग लिखते ही नहीं है यार, they don't really Yeah. write anymore, they're like यार Same. there's no point in writing, why should फोन पे नोट्स ले लो. तो वो लिखने का, जैसा कल मैं अपने दोस्त से मिला था, he was so excited about notebooks. Whenever we meet, like we get excited over notebooks. We love this one brand, it's called Moleskine, और उसकी notebooks हम लोग मैं जब यूरोप से वापस आया, so I got him like a bunch of notebooks and everything. तो उसने वो सारी ना पढ़ ली,
तो वो 5 थी, वो 5 ने भर ली, तो ही वेंट टू लाइक लिबर्टी बुक्स, वहाँ से उसने खरीदी। तो What ये did he write? या कुछ भी आपको आइडिया आ रहा है, कुछ Oh, okay. लिखना है आपने, कुछ टू डू But for लिस्ट है that, you वो। have notes on your mobile या देखो, as अगर well. अगर आपने कंप्यूटर पे बैठे हुए ऑलरेडी, अच्छा, ठीक है, तो आपने जो कुछ screen लिखना पे, है, तो आपने स्क्रीन टाइम भी कम करना है, कुछ लिखना है, आपकी जेब में हर वक्त आपने वो लिख दिया। यार जिस तरह आपने फोन, जिस तरह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, टॉकिंग अबाउट दिस लास्ट नाइट, वी वर आल्सो लाइक आई वोंट से एनीवे, so we were like discussing like sharing this thought, like how many numbers do we remember now? how many numbers? Numbers, like if I had to ask you, like, do you remember your best friend's phone number? No. No. ठीक है, it's all on the phone now, and then it's like ठीक है यार, WhatsApp पे फोन अगर हो गया तो निकल आएगा, नंबर निकल आएगा, तीसरे के पास होगा, चौथे के पास होगा, नंबर मिल जाएगा। यार मुझे तो PTCL के numbers याद है, हाँ, वो क्योंकि वो याद है कि हमारे पास मतलब सेव करने का उसने दिमाग में सेव करके लिख लेते थे हम। तो he has this thing like he makes phone book. He has a phone, is in one moleskin like notebook with pocket size होती है, उसपे सारे नंबर, इंपॉर्टेंट नंबर्स लिखे हैं, तो उसको बस्ते में होती है हमेशा, यार फोन कभी बंद हो गया, कुछ हो गया, तो वो आई हैव दिस फोन नंबर, फोन, छोटी सी फोन बुक के नंबर। तो yeah, I think yeah, people should start writing. So coloring does one of people the, do write like my therapist says that you should have a diary हाँ, जर्नलिंग and आपको करनी चाहिए, वो journal and जरूरी write होती है। everything हाँ, daily, but मुझसे वो नहीं हो सका। मेरा डायरी लाइक जो मैं लैपटॉप पे टाइप कर लेती हूँ, because I can't write, मतलब हाँ, it irritates me. But that was also something that I don't know why people think it helps, or maybe it wasn't for me, हम्म, but क्योंकि for me, my letting, because therapy is basically letting things out हम्म, and talking to somebody. And I thought it was fixing yourself, like somebody will fix you, but they don't. हाँ, And सारे पैसे भी जाया हो गए. Like they just tell you ways to cope हाँ, up with हाँ, things and exactly, stuff like that. So मेरे लिए neither the writing worked, uh, neither the coloring worked. I tried अच्छा, that as ओके, well because I don't have patience. अच्छा, ओके, ओके, So you need a lot of patience to complete the whole thing. और मुझे पता है बस किसको complete करूँ. अच्छा, So ओके, yeah, so that didn't work. Music, yes, but उसमें आप let out नहीं करते. So my way was just to talk to myself out loudly, अच्छा, इंटरेस्टिंग, and it works. Like some people think that this is weird, talking to yourself out loudly. People do talk to themselves in their I mind do and that. stuff. I recite poetry, like You do what? I recite poetry, or like yeah, I do recite poetry, like out in the kitchen, then daftar mein bhi. Sometimes I'm making chai because I have this thing. I go to the kitchen, make myself chai, and then I'm reciting poetry and all that. Oh, So when people are like, "Hey, bhai, kya kar?" Or like, yeah. So one of my colleagues, she's like, "Oh, man, what are you doing?" I'm like, "Oh, I forget कि मैं घर पे नहीं होता." So yeah, but yeah, talking to yourself to out yourself loud. it works. And I talk to myself like they're two different people. अच्छा, okay, और interesting. एक तरफ से एक पर्सपेक्टिव है, दूसरी तरफ से दूसरा पर्सपेक्टिव हाँ, है, बिकॉज आप सेल्फ अवेयर तो होते हैं ना कि क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं. हाँ, वो तो हाँ, So you are also unbiased with yourself, और फिर आप उसको चीज को करते हो, because and that worked way more better than the 1 hour session that I was having with this unknown person who was supposed to be the therapist, and I was हाँ, like कि पैसे किस चीज के ले रहे हो? हाँ, 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 And because वो नहीं, वो आप घंटा होता है, and then आपने उस घंटे में सब कुछ उसको कैचअप करना होता है कि ये चीजें हुई हैं. हाँ, हाँ, तो ये वीक लेके थोड़ा हाँ, और फिर घंटा खत्म हो जाता है, आपको खत्म हो गया सेशन. हाँ, खुद तो फिर पैसे जाने हैं वो पापा देने हैं, so why is it so in then? Why this therapy thing is so in this trend? It's more of a trend कि हम therapy देते हैं, हम therapist के पास जाते हैं. It's such a waste of time and money. I won't like I won't say it's a trend, like It is a trend. अच्छा, okay, Sometimes people, now I feel like there are people who think it's cool अच्छा, okay, oh wow, okay, to mention that they're going to therapy. अच्छा, okay, wow, I don't know interesting, why it's cool, but people think that. oh, interesting, but like because like यार मेरे हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, like now moved to Canada, he he went to therapy like twice, and उसके थेरेपिस्ट ने ना पहली दफा जब गया तो किसी ने रिकमेंड किया, वो थेरेपिस्ट बहुत अच्छे वहाँ जाए, तो वो चले गए, तो उन्होंने सारी रुदात सुनी उनकी, उन्होंने कहा नमाज पढ़ना शुरू कर, आपने अल्लाह से यारी लगाया, उन्होंने कहा भाई अल्लाह से यारी लगानी थी, मैं आपके पास क्यों आया हूँ, मतलब ठीक है, तो वो कहते हैं आप तो दीन से दूर है, आप
तो फिर एक और के पास गए तो उन्होंने भी कुछ इस तरह का जवाब दिया उनको, तो वो उनको रियलाइज हुआ कि भाई ये काम नहीं करेगा. एंड देन ऑल्सो वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स, I recommended him a therapist and everything, and then he did go there. And after like 3 sessions, he was like, "Yeah, ठीक है, like I know what I have to do, like I have to like talk and all." And the person has given me, the therapist has given me directions, so I'll work on myself, and if it doesn't work, I'll go back. So he तो went. खुद ही करना होता है सब हाँ, कुछ वो वैसे भी, खुद उसने जो ये क्या बताया कि फजूल यार बात ये है। फिक्स करें, ये करें, आप ठीक हो जाएंगे, आप तो हो जाएगा काम. तो और वो किया उसने और डूइंग वेरी वेल. तो वो चीजें हैं कि आपने खुद थोड़ा आप में देखिए, आपको कभी कभी एक्सटर्नल पुश तो चाहिए होता है, वो आप इस पे नहीं आप कह सकते कि यार एक्सटर्नल आपको इंटरनल से इंटरनली मोटिवेशन आए, ठीक है, नहीं होता, मतलब इट्स वेरी हार्ड फॉर पीपल. और फिर ये भी कह देना कि यार आप ना थेरेपी में, तो मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, आप भी जानते हो, जो कहते हैं यार थेरेपी जरूरी है, कुछ नहीं होता. आप ना अल्लाह से यारी लगाएं, आप ना लोगों से बात करें, आप बाहर जाएं, आप पार्टी करें, ठीक हो जाएंगे. नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता बहुत सारे लोगों के साथ. यार वो हर बंदे का डिफरेंट है, लाइक हाँ लाइक आवर पेरेंट्स ये तो इस थेरेपी और इस चीज को तो मानते ही नहीं ना, हाँ, बिल्कुल ही लाइक रेडिक्यूल कर देते हैं ना कि हाँ नहीं ये तो ये होता तो होता ही नहीं है, मेंटल हेल्थ इज नॉट अ थिंग, है. एंड हमारे जमाने में तो नहीं होता था, हाँ, हमारे नहीं हो तब भी होता था, लेकिन होता उसको था कोई उसके लिए टेंशन कोई नहीं देता टर्म था. नहीं थी। एग्जैक्टली, कोई टेंशन नहीं देता था. जब हम अपनी माओ को देखते हैं यार, मतलब सब इतना, अब अगर माओ को देखते हैं और अपनी खालाओं को देखते हैं उस एज की, जो नाउ माय मदर इज नाउ 70, एंड सो शी, हर आइडिया ऑफ लाइफ एंड देन द चॉइसेस शी मेड, आई एम प्राउड ऑफ हर लाइक टू एवरी एक्सटेंट. बट कुछ चीजों पे आपको लगता है कि यार ये आपने कैसे, मतलब एंज तो नहीं होता कि यार कि आप दिस इस इज चीज की रॉन्ग। अपने अब्बे को देखते हैं और उनकी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ. ही इज हैप्पी, ही इज लाइक नॉट लाइक डजंट केयर अबाउट एनीथिंग. एंड और आपको ये रियलाइज होता है कि यार अम्मा ने, माओ ने जो जितना वो पूरा एक्सपीरियंस किया है, ट्रॉमा भी और सारा कुछ, उनका इमोशनल बैगेज और सारा कुछ इतना ही बहुत डिफरेंट है, ज्यादा भी होता बहुत है, ज्यादा भी एंड है, ज्यादा भी है. they have not processed it, हाँ like वही ना. because they don't know how to do that, हाँ, दैट्स ट्रू. that's why they don't think कि अगले बंदे को भी ये चीज होती, like when my mom found out, तो she also said कि तुम ना नमाजें पढ़ा करो हाँ और हाँ वो, हाँ. and मैं पढ़ती हूँ, like I am a अच्छा religious अच्छा person, अच्छा, okay. तो but I told her कि you know ये दोनों साथ चीजें नहीं है, let's make हाँ this हाँ keep it separate, या वो हर religion तो खैर it's personal for everybody and हाँ, let's it's not like go there, but दिस इज नथिंग कि मतलब उनको लगा कि अगर आप थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो तो आप पागल yeah, and not just like her or anybody like of that generation, वो कहते हैं कि ये क्या है, और फिर वो कहते हैं कि इतने सेंसिटिव बच्चे आ गए हैं आजकल कि थोड़ा सा उनको कुछ हमारे स्ट्रगल हमारे हो थप्पड़ जाए, मार तो ठीक हो जाता है. हाँ तो ट्रॉमा आ जाता है, और फिर ट्रॉमा हाँ like my mom and dad is like trauma is a very trending हाँ word, और हर थोड़ी देर बाद ट्रॉमा हो जाता है किसी ना किसी को, तो इधर लाइक यू गाइस आर वेरी सेंसिटिव, तुम लोगों ने दुनिया देखी नहीं, हमने देखी है. ट्यूबलाइट के नीचे बैठ, स्ट्रीट लैम्प के नीचे बैठ के पढ़ते थे, सर्दी होती थी, स्वेटर नहीं होते थे, वो वाले की बातें कर रहे हाँ थे. so तुम्हारे लिए हमने क्या क्या नहीं किया, तुम्हारे लिए हम पैदल जाते थे, तुम्हारे लिए दूध लेके आते वो किया तो बहुत है ना, लेकिन उनके लिए वो स्ट्रगल था, हर जनरेशन के लिए अपने थे. हाँ, अपने अपना है स्ट्रगल्स ना, हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट. एंड अगर आप एजुकेट हो रहे हो एंड देयर इज मोर अवेयरनेस नाउ, सो दैट्स अ गुड थिंग हाँ rather than stopping it कि नहीं ये गलत है. हाँ So she got like when I don't not really tilted towards therapy या कुछ, because I told you कि आप खुद भी कर सकते हो. But when my mom found out, she na got a bit sad कि and she blamed it to herself कि I couldn't keep my daughter sane, that she or better, that she needs वाओ. some extra help. And I was like, this is not about you. हाँ यार ये वाला था ठीक है कि like वो अपने बोलेगा कि बताओ. मैंने तरबियत अच्छा, नहीं सही की, या तरबियत मैं नहीं थी, उधर तरबियत की में थी हाँ. नहीं, and then she like was a very guilty emotional. फिर आप हाँ, गिल्ट जो है ना, जितना हमारी जनरली देसियों में गिल्ट भरा हुआ है ना, कितना गिल्ट वो यूज करवा रहे हैं ना, कोई नहीं करवा रहा. तो गिल्ट कि भाई ये नहीं, ये कर लो. आई गेट योर पॉइंट के And I was like कि यार मतलब ये ऐसा नहीं था ना, फिर मैं जब नेक्स्ट टाइम मैंने कोई सेशन गया तो मुझे यही गिल्ट हो रहा था कि मामा क्या सोच रही हाँ होंगी, भाई ना, कि भाई ये होता है I क्योंकि shouldn't take this. एग्जैक्टली कि माँ का हम, क्योंकि यार हमारे लिए हमें हमारे अपने पेरेंट्स की वैलिडेशन ही बड़ी शदीद चाहिए होती है ना. वो भी में मसला है हमारी उसमें
That's important. कि वैलिडेशन चाहिए। हाँ। क्यों चाहिए यार, मतलब तो आपके नहीं चाहिए। पेरेंट्स हैं। नहीं 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 यार, देखो आप जितना उनको उनकी आप वैलिडेशन आपको चाहिए होती है ना, दे आल्सो लाइक गैस लाइट। I mean, they don't mean to do that. और वो मतलब they यार देखो don't. वो खुद भी गैस लाइट तो हुए हैं अपने हाँ माँ बाप ठीक के है, वो हाथों, हुए तो होंगे, गैस वो लाइटिंग उनका जब चलती थी। लेकिन अब आप वो वाली चीजें जो आपको पता, उन्होंने जिंदगी गुजार दी है ना, 70 साल के हैं, आई डोंट नो हाउ ओल्ड योर पेरेंट्स आर। माय डैड इज 79, माय 78, माय मॉम इज 70। I think my dad turned 64 or 68. I don't know. चलो, Not sure. तो 60s. अब हमने इतनी जिंदगी गुजार दी है, तो आपको ये तो रियलाइज हो जाना चाहिए ना कि यार कि हमने अपने, हमारे माँ बाप ने हमारे साथ गलतियां की हैं, हमने आगे नहीं करनी। थोड़ा सा तो आपको आना, लेकिन वो रियलाइजेशन आना भी बड़ा मुश्किल होता है उनको, कि वो रियलाइज करना कि नहीं, उनको लगता है वो उसी टाइम में फंसे हुए हैं। वो मेहदी हसन की जो गजलें थी, नथिंग अगेंस्ट मेहदी हसन, मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स, मतलब बहुत, मतलब मैं आज भी उनको सुनता हूँ। लेकिन ये कह देना यार कि ये जो मतलब ऑफ टॉपिक, लेकिन ये कह देना कि यार मेहदी हसन का म्यूजिक का जो आज का म्यूजिक है वो नहीं है, तो लोग सुन रहे हैं ना। आई हैव लाइक आई फाइंड पाकिस्तानी म्यूजिक, द रीसेंट म्यूजिक शिटी, ठीक है, Okay. ठीक है, इट्स जस्ट मी, बट द रीसेंट म्यूजिशियंस बट डजंट लाइक, उनको सुन रहे हैं ना लोग, उनका एक वो है ना, उनकी वो सुन रहे हैं लोग, तो आप नहीं सुन रहे तो वो आपका मसला है, वो आपको नहीं पसंद, ठीक है, लेकिन लोग सुन रहे हैं ना, रेलेवेंट है वो लोगों के लिए, इसलिए वो पैसे कमा रहे हैं, दे हैव अ वे बेटर लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग। सो जस्ट टू से लाइक हमारे टाइम में ये था, तो वो बेस्ट टाइम, वो बेस्ट टाइम नहीं था भाई, आपके टाइम में वो था, अब टाइम चेंज हो चुका है, अब आपके लिए ये रेलेवेंट है, मतलब दे आर रेलेवेंट नाउ। उनके लिए अडेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, आई थिंक। हम कर रहे हैं, हमारी जो अब नेक्स्ट जनरेशन है वो तो तय कर ही रही है हर चीज से अडेप्ट, पर उनके लिए ऑब्वियसली मुश्किल था, और वो दे थिंक के जो उनके फादर ने किया हम भी उसी तरह चलेंगे, लाइक हमारी बात मत। लेकिन अब मैं डिफरेंस देखती हूँ, लाइक माय ब्रदर इज आल्सो अ फादर नाउ। अच्छा, एंड ही सीज एंड एनालाइजेस कि जो पापा ने मतलब how he treated him, so he changes that script, has changed the script with his own son, and you know आप इतनी awareness आ गई, but उनको समझ नहीं आती, बड़े like दादा नाना जो बन गए अब they're like कि नहीं ये क्या बात है, and like now it's more of this, but funny thing is कि पहले था कि अगर किसी बच्चे ने कुछ खराबी की तो एक चढ़ चुप हो गए उधर हो। अब it's more like you talk to the kid and you try to explain them this is the situation, this is right and wrong, and which requires a lot of patience. But it is the new thing and it's good. And they're like, what? ये क्या तरीका है? वो छोटा बच्चा इसको क्या समझ आ रही होगी? और वो बस एक और now that there was this तरह से, लेकिन उनको होता है कि इस तरह नहीं समझ आती, गुस्सा करो, डांटो, और फिर आ जाएगी like and then you are surprised that why are people taking therapies. वही ना कि वो बचपन से वो अभी तक, जैसे यार हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, he has like 2 kids now, so both like sons, and like both of them are like very interesting kids, very sweet and everything. So he was with me once and he was like, यार I have to go grab this hot wheels नहीं होती गाड़ी, वो ले, मैंने कहा इस वक्त मिल जाएगी, वो स्टोर खुला होगा, मैं वहां से ले, तो उतर के गाड़ी से जाके लेके आ गया। तो उसने कहा यार कि मैंने अपने बेटे से वादा किया था कि आई विल ब्रिंग दिस ना टुडे, and because his kid like loves collecting those, he has this wall जहाँ पे वो करता है, तो there was this one limited edition piece जो उसने ऑर्डर किया हुआ था, वो आया, तो उसने वो पिक करना, तो मैंने कहा यार ये कल भी, तो मतलब कल या परसों, कहता नहीं मैंने इसको वादा किया हुआ, तो आई हैव टू लाइक गेट इट टुडे before he goes to bed, and his bed time is like 8:30, and this is happening around 7:30, so he was like running home, he had to run home, and उसको देना था बेटे। मैंने कहा इससे होगा क्या? कहता यार उसको ये होगा कि I have promised him something, so he'll also value his promise, like he'll keep his promises. This like small gesture, like if I'm getting you this, if I promise you I'll get this to you after work, so it means I'll get this to you. I won't make like fake promises कि भाई आ जाएगा देखने, तो वो उसको अब उसमें भी है, he has this thing like he shows up on time, he has like अच्छा हाँ ठीक है यार कि मैंने 8:30 जाना है बेड पे, तो वो खुद ही उठ के चला जाता है, बाप को तंग नहीं करता, माँ को तंग नहीं करता, तो जाके चला जाता है कि हाँ यार before, I don't want to get them pissed or anything, like I'll go to bed, and he's 11 or 12. Oh, that's nice. And yeah, तो I think ये वाली छोटी छोटी हैबिट्स में ये आपको जितना खुद मतलब मतलब वो the whole thing boils down to like actions speak louder than words. than words. तो वो सारी चीजें कि आप खुद नहीं कर रहे, तो वो
आगे क्या करें, वो भी तो आपको देख ही रहा है ना कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब सर छोटी सी बात, अभी my I don't know how much time we have now, but me and my colleague, like, we were smoking yesterday, at a smoking spot yesterday, and then we borrowed a lighter from this guy who was sitting next to us. We didn't have a lighter, so हमने सिगरेट रोल किया तम्बाकू वाला। uh, ये बहुत सारे लोग कहते हैं रोल किया हमने, so तम्बाकू वाला रोल किया और हम लोग बैठे पी रहे, तो हमने से लाइटर मांगा। हमें इतनी माचो एनर्जी से लाइटर दे दी, माचो शदीद माचो एनर्जी थी उसमें, तो वो उन्होंने लाइटर दिया, मैं लाइटर देकर वापस किया, तो जो उसने सिगरेट मालबोरो फेंका उन्होंने जमीन पे, डस्टबिन में नहीं डाला, उन्होंने फेंका, उससे पाँव से उसको मसल के वो चले गए और गुस्से में। एंड वी वर हैविंग अ कन्वर्सेशन, वी बोथ स्टॉप्ड कि भाई क्या हो गया, मतलब उसको फेंको ना डस्टबिन में, मतलब इतना आपने करके क्या, इतना एग्रेशन क्या हो गया, मतलब फाइन। तो एंड जस्ट लेफ्ट। या बिकॉज़ यहाँ पे इतनी आदत नहीं है कि लोग सिगरेट पी रहे होते हैं उधर ही फेंक देते हैं। फेंके एंड देन आप लाउंज में यार, मतलब आप काम करते हैं एंड ऑल दैट, जस्ट थ्रो इट इन द डस्टबिन, लाइक हाउ हार्ड इट्स, लाइक 2 डस्टबिन है यार साथ, और 2 फुट भी नहीं, आप पीछे हाथ करके फेंक सकते हैं। तो यू लाइक नहीं, लाइक वो तो उनको अपेरेंटली चस्का भी होता है ना कि ऐसे पी के और ऐसे फेंका, और दिस इज लाइक या दिस इज जस्ट मी माचोनेस। दिस इज macho because I have this thing के I don't know if I should say this on camera. I see whenever I'm like we're hanging out with friends and all that. So and lumps में तो आप वो देखते हैं ना macho, क्योंकि उनका कसूर भी नहीं है यार, I don't blame them. The young kids and everything, they come from like when they're coming from all boys school or like hanging out with all friends. I have this thing like I see men who are like very macho because they sort of protecting themselves. क्योंकि अगर macho नहीं होंगे, aggressive नहीं होंगे, तो they don't want to sound like feel vulnerable कि हम vulnerable, वो नहीं। ठीक है, आप किसी यंग बच्चे को या यंग से 23, 21, 22 या 18, 19 की उम्र में आप आ जाते हैं, यूनिवर्सिटी शुरू करते थे ना 19, तो 19, 20 साल के लड़के को आप उस तरह से vulnerable होता हुआ नहीं देखेंगे इस लाइफ में, बहुत रेयर ही होगा। वो अपने और बॉयज के साथ है, तो he has to be, apparently they think yeah this is what they should be and all that. So I have this thing like I don't know if I should say this on camera, but you can cut it out always कि आप देखते हैं माचो को, लोगों को very macho and stuff. So I have this thing like I say कि यार अगर इसकी ना nobody like letting him around शीशा के, अगर शीशे के सामने 30 सेकंड ज़्यादा देखेंगे अपने आप को, they'll get themselves pregnant. So yeah. इतने macho हैं if they like if they like stay in themselves, look at themselves in front of a mirror, they'll get themselves pregnant. So yeah. Wow. Yeah, some people are like, just stop saying this, like, oh, you can't say this. So yeah, but I did say this on camera. Please take this out. I don't want to get cancelled. Not that I might get cancelled pretty soon. I'll be persona non grata pretty soon. Thank you for all your insights. They were very interesting. And thank you. That's all I can say to that. If I have to ask, like, how much of you think this has to be censored? Not much. ठीक है यार, ये तो अच्छी बात है। क्योंकि हम पीछे बात कर रहे थे हमारे दोस्त कल रात को कि किस तरह पाकिस्तान में मीडिया जो है ना वो पाकिस्तान के पता नहीं किसी मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान में जो है ना वो मीडिया सेंसरशिप बहुत कम है। उन्होंने कहा अमेरिका में बहुत ज्यादा होती है, यूके में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उन्होंने उनको कहा कि यार यहाँ पे तो शोज ही बंद हो जाते हैं। नहीं, हाँ, थोड़े से रूल्स होते हैं इंस्टा और फेसबुक पे, like when you upload them, so there is this language that they sense, or if there's vulgarity or inappropriate content, तो वो कहते हैं। But this was fine. This is that's not an issue. No beeps. No beeps. No nothing. It's cool. So I mean, I feel like we did have a kind of conversation forgetting whether we're in a Islamic Republic of Pakistan. But that's fine. That's तो ये हम तो DHA में ना, ये तो पाकिस्तान। हाँ, DHA is not part of Pakistan. पाकिस्तान में तो ये आता भी नहीं ना, पाकिस्तान इसमें आता है तो हाँ। Thank you so much for taking the time out. It was fun. Thank you. Anytime if you want to like invite me again, I'm more than willing to come on the show and like talk about other things like apart from bumper. Clearly like, you have a lot to talk about. Yeah. I can go on. I can go on for days, but yeah, but sadly we don't have time. Yeah. It's more of a 1 hour thing. But thank you so much, and I will see you next time. Sure. Once. Thank you. Thank you. Bye.